दिसतोय? We start in 10 minutes. बायांचं हे थाकून जातो एवढा ढेर आहे. आणि हे करायचं. ओके जा.
பேசுனீங்க कधी चालू करणार आहेत? हॅलो हॅलो सर, कधी चालू करताय? काही अपडेट नाही सर.
Good evening, all. Sir. Good evening, sir. My voice is clear. Yes, your voice is clear. Okay, we start. Good evening, all. Good evening, ma'am. Good evening. Good evening, all. Dear esteemed guest, participant. I, Assistant Professor, Head of Commerce Department and co-convener of Faculty Development Program. It is my great honor to welcome you all to this Faculty Development Program organized by Sri Vagheshwar Gram Vikas Pratishthan, Sri Vasantrao Farate Patil Arts, Commerce and Science College. I am delighted to see so many passionate educators and learners gathered here today. This program is an excellent opportunity for us to enhance our teaching practices, embrace new technologies, and bring innovation to our classroom. Our goal is to equip educators with the knowledge and tools needed to meet the ever evolving demands of the academic world. I would like to extend my sincere thanks to our resource persons, Savita Bodke ma'am, our Honorable Secretary, Donal Rajiv Farate Patel ma'am, Kurumkar sir, for guidance for this program a success. We have an existing lineup of sessions and speakers who will guide us through various aspects of faculty development programs. I encourage all participants to actively engage, learn, and apply the knowledge gained during this faculty development program. Together, let's continue to grow us as an educator, contribute to advancement of education. Thank you, and I wish you all productive and enriching experience. Now, I request our Honorable Secretary Ma'am, Mrunal Raji Farate Patil Madam, for her message for our faculty development program. Honorable Secretary Ma'am. Good evening, everybody. Dear Good organizers, evening, ma'am. good evening. Dear organizers and participants, I am Ronal Farate Patil, Founder Secretary of Sri Vagheshwar Gram Vikas Pratishthan. I am extremely proud to witness the enthusiasm and dedication of all involved in the faculty development program organized under the aegis of Sri Vagheshwar Gram Vikas Pratishthan. This program is not only significant in promoting academic excellence, but also reflects our institution commitment to reaching new heights. On this occasion, I would like to extend my heartfelt thanks to our resource person, Savita Bodke Madam from Score Achievers for her guidance and inspirations. I also convey my best wishes to our principal, Kurumkar sir, and the Department of Commerce, BBA, IQAC for their outstanding contribution of and commerce participation. Their vision and management have played a crucial role in making this event success. I congratulate the organizers for their efficient planning and the participants for their commitment to developing their knowledge and skills. Such efforts are vital steps in the progress of both individual growth and institutional development. Let us all continue to strive for academic innovation and excellence. Best wishes to all for a successful and enriching program. Thank you. Thank you, Honorable Secretary Ma'am. Now I introduce of our resource persons, Savita Bodke Ma'am. We are truly honored to have with us today Savita Bodke Ma'am, the esteemed founder of MVS Finance Score Achievers,
With her vast experience and expertise, she has made significant contributions to the field of finance and education. Savita Bodke ma'am is not only an entrepreneur but also an accomplished author and corporate trainer. She holds multiple qualifications including MMS, MCOM, and LLB, along with several other certifications that enhance her deep understanding of business and finance. As the founder of MVS Finance Score Achievers, she has been instrumental in helping countless professionals and organizations evaluate their financial knowledge and skills. Her passion for education and training made her respected figures in both corporate and academic circles. Today, we are fortunate to have her share her insights with us. We look forward to learning from her wealth of knowledge and experience, which undoubtedly be invaluable of all participants. Please join me in welcoming Savita Bodke ma'am to this faculty development program. Thank you. Now I hand over our session to our honorable resource person, Honorable Savita Bodke ma'am. Oh, thank you so much, everyone. Thank you so much, ma'am. Thank you so much, sir, for giving me this opportunity to increase the knowledge of the all the faculties regarding this financial literacy. So, good evening, everyone. Good evening, each and every participant. So, today we are going to start with the stock market fundamentals for interdisciplinary educators. Now, what is the basic idea behind this type of FDP? Because those who are from the commerce background, they are at least aware regarding little bit regarding the stock market. But what about the educators, those who are from the engineering background, or those who are from the linguistic background, or even those who are from the healthcare background? They are not even aware regarding the basic concepts. So we have designed this faculty development program for developing your knowledge and educating you in a right manner regarding the stock market. So today we are going to start first with the introduction of the stock market. I hope that my screen is visible to each and everyone. Can anyone please confirm it? Yes, ma'am. Yeah. And in the chat section, there was one request that please speak in a Marathi. Yes, obviously, I'll speak in a Marathi also in between. But as of now, in this FDP, we are having the participation from all over the India. That's why we have started in English. So I'm going to use the English, Hindi, and even the Marathi whenever it is required. If anyone is having any problem, you can unmute yourself and you can ask your questions directly to me. Okay, so we are going to start with the basics, the extreme basics of the stock market. And the first we are going to understand that what is basically the stock market, because each and everyone nowadays aware regarding the share market. What is the stock market or the share market? Actually, we are having lots of the craze regarding the stock market, but the majority of the people are not aware that how to trade into that, and they trap into the some of the fraudulent practices. And just because of that, the college came up with the idea that we should educate the people, we should educate the educators and the young minds in the right way, that so they can study the stock market in the correct manner and they can invest and they can grow their wealth. So the first of all, we are going to start with the fundamentals of the stock market. What is the stock market? It's very simple. Suppose if I wanted to buy the vegetable, where I'm going to the vegetable market, because the market is a place where the buying and selling of the particular thing is happening. So what is the stock market? It's very simple that the stock market is a place where the buying and selling of the shares, and that is also called as the stock. So if someone is telling you that I am investing into the stock market or I am investing into the share market, both the things are the same. So that is nothing but the market where the buying and selling of the shares is taking place. Now, why there is a need of the stock market? Why?
क्यों चाहिए ये स्टॉक मार्केट, काय गरज आहे या स्टॉक मार्केटची? सो basically the stock market is providing you the funding to the entrepreneurs. Let's take a very simple example. As of now, we will just first discuss and then we will come back to our PPT. Okay, I'll just stop presenting over here and we will discuss. Now just imagine that you're a businessman, you're a business person. Think and tell me, each and everyone, at least in the chat section, that if you're a businessman, you require money, yes or no? Please Yes. tell me. Yes, ma'am. Yes, Yes. everyone requires the money. And we don't require, if you are in a business, we don't require hardly 1 lakh, 2 lakh. Usually that requirements is of the big amount, means 1 CR at least, 2 CR, 5 CR, correct? And whenever we are not having that type of funding, but we wanted to start the business. So what happened? We are not having funding, but we wanted to start the business. Then what to do? So there the stock market plays a very important role. Now you think that, suppose you require the 1 CR, you are not having that. If you will approach to the bank, whether the bank is going to give you the funds at free of cost? Think and No. tell me. Bank will never give you the funds at the free of cost. They are going to charge the some sort of the interest to you, correct? But the stock market is the place which is giving a money to the entrepreneurs or to the business people at free of cost. So that's why after some point of time, every businessman wanted to lease their business on the stock market. Why? Because they are getting capital. Now what is the capital? Money. The money which you require to start the business or to expand the business, that you are getting at the free of cost. So that's why the stock market plays very important role. Let's take a simple example. Suppose if you have bought one stock of SBI, I hope that each and everyone is aware that what is SBI. I Bank. hope Yes, Bank of National Bank. SBI can स्टेट बँक ऑफ इंडिया. स्टेट बँक ऑफ इंडिया ही देशातली सर्वात मोठी गव्हर्नमेंटची बँक आहे, करेक्ट? आय होप अप टू this is clear. So if I am buying the State Bank of India's share, if the one share or the 1,000 quantity of share, it means that I have given my money to the State Bank of India for operating their business. I hope that the concept of the stock market and why the stock market plays a very important role is clear to each and everyone. Can anyone please Yes. confirm? Okay. Yes, ma'am. Okay. So it's very simple that whenever we are buying the stocks, we are giving our funds to the company to run their business. So Business. that is basic idea of the stock market. Now you have to always remember the one more thing. If I have given my money to the State Bank of India, if I'm the shareholder of the State Bank of India, now I am also the part owner of State Bank of India. Why? Because I have bought the shares of the State Bank of India. So always remember that whenever we are buying equity shares, now whatever the shares are traded on the Indian stock exchanges, that is NSE or BSE, majority of them are equity shares. So I can say that I am the part owner of that company. Suppose tomorrow, if you will buy the Reliance Industries, 100 shares, then you will also become the owner of the Reliance industry. But whether the entire owner? No. Up to the liability of the 100 shares. I hope that this concept is also clear to each and everyone. If we will make this as an interactive session, that will be the better. Yes, ma'am. Okay, good. So now Yes, ma'am. again, I'm going to start sharing the screen and we will understand the next things. Now, it plays the crucial role in the economy by allocating the resources efficiently. Now, why it is playing the crucial role? Always remember that crucial role means very important role. सर्वात महत्वाचा जो role असतो, that is played by your stock market.
But why? Always remember that you are giving your money to the business. And whenever you are putting your money into the business, business is growing. For example, if I am giving my money to the State Bank of India, where the State Bank of India will use that funds, they will open the more number of branches. For example, they are having one branch in Pune. They will now expand their branches. For example, in a Shirur also, they can open their 2 or 3 branches. Why? Because as of now, they are having money with them. Now you think and tell me, whenever there will be the n number of the SBI branches, they will recruit the people, means they will create the more employment. So always remember that in case of the economy, whenever you are giving the money to the business, business is always expanding. I'm just writing the initial, and it is always creating the more number of the jobs. So job is very important for any economy. See, nowadays, those who are the youngsters, the people like you and me, we are having lots of the job opportunities. Means, suppose we are not satisfied with our present job, we can switch and we can get the job easily. Why it is happening nowadays in India? Because our economy is far better as of now as compared to our parents. When our parents were young, that point of time, they only had the option of the government job. But as of now, we are having lots of the option. We can start our own business, we can go into the private sector, we can go into the government job, even we can settle into the abroad. And why it is happening? Because nowadays our economy is much more better. So I hope that the concept of the stock market is clear to each and everyone. Can anyone Yes, ma'am. confirm? Yeah. So now we are moving to the next topic. Now we have already seen this definition of the stock market. We have seen the role of the stock market over here. It is providing the funds to the business, and it is always helping a lot for the economic growth. Now, instead of this theory, I would like to show you something more practical. So what I'm doing, I'm just going to our friend, the friend of the each and every student. Okay. So here, just you have to go on the Google and you have to search something like that. This is the NSE India. Now, what is the NSE India? Suppose if I wanted to buy the shares, from where I can buy, I'm just having 2 options as of now in India. One is the NSE and another one is the BSE. So you have to search this NSE India. This is the most useful website for you to check out each and every data henceforth. Now, the next one, I'm just clicking on the 3rd tab, which you are able to see on my screen. And this is the BSE India. First, I'll go to the NSE India. I'm going to click it over here. And what is this NSE? This is the National Stock Exchange. So, what is basically the stock market in India? That is NSE or BSE. You guys must be aware that whenever we are watching the news or whenever we are reading the newspaper, they always talk about the Nifty and Sensex. कि आज Nifty इतना बढ़ गया, आज Sensex इतना गिर गया. So what is that? Basically, they are telling you about the overview of your stock market. So this is the National Stock Exchange. Okay. And what kind of data is useful for us? Now here, if you will see the screen, what they have given you over here, where I'm moving the cursor, I'm just moving the cursor over here as the Nifty 50. Now the next one is Nifty Next 50. This is the Nifty Mid Cap Select. This is next the Nifty Bank. So all this, what is actually this, what kind of terminologies are this, that we are going to come across during this entire 5 days. Now, as of now, to make it more simple for the beginners, here you can see something. I hope that where I have highlighted, you are able to see this amount. This is the 24,619 and
they have just denoted over here a one downward triangle, and that is in red. Now, below that, you can able to see that it is nothing but minus 58.80. Okay. Akshay, you are not able to see my screen. Can anyone please confirm? Because here I'm able to see that my screen is Ma'am, visible. screen is Yes, visible. Yes, Screen is visible, visible. visible. yeah, it's visible. Visible. Yes, ma'am, it's visible. Okay, thank you. So those who are facing the problem, please refresh at your side. Maybe you're having some sort of the internet issue. So, and here you can see that minus 58.80, and in bracket they have returned this in a percentage. But what is basically this? हम लोग ये क्यों देख रहे हैं and why we have to understand this? Please remember that if I'm going into the any market, correct? Or if I'm visiting to the any place, let's take a simple example, or the DMart or any departmental store. Suppose if I wanted the sugar, so I'll go to the sugar section and there I can find out the n number of the variety of the sugar. Or if you wanted to buy the rice, you will visit the rice section and you will be able to get the rice over there. So what is this National Stock Exchange? National Stock Exchange is a one market where all types of shares which are trading on the stock market are, you are able to trade it over here. But now how I can come to know as the beginner that this is the right time to enter into the market or wrong time to enter into the market? To understand that, those who are having the notepad, please note down that to understand that we require to go through this Nifty 50. Now, what is this Nifty 50? Nifty 50 is having a combination of the 50 stocks. Means you can say that that is the basket of the 50 stocks in which they have put the shares from the all of the sectors. Now, what is this? Let's make this more simple. Suppose you are having the inter-collegiate competition and you wanted to send your students to participate in that. आप लोग क्या करोगे? Those students are having the expertise in something, some one quality. For example, someone who is good in a singing, someone who is good in a photography. You will send them to the respective competitions. So same like that, in a Nifty 50, the top performers of the industry, they have taken it over here and they have made that basket of the 50 shares. So now this basket of the 50 shares will indicate you that what is the best time to buy and what is the best time to sell. I hope that the concept is clear. What we have discussed so far, I'll just tell you that NSE, that is the National Stock Exchange, that is one market. And if you wanted to trade over here, what is going to help you? Who is your friend? The data of the Nifty 50. And what is the basically the Nifty 50? Nifty 50 shows you the performance of the 50 stocks, which are the top performers in the respective industry. तो इंडस्ट्री क्या हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल बैंक, पेट्रोलियम, FMCG प्रोडक्ट्स, हम लोग इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं, करेक्ट? So that stocks are also listed on the stock market. For example, whatever the clothes we are wearing. For let's take a simple example. Now the wedding season has started, correct? तो वेडिंग सीजन के लिए जो जो चीजें जरूरी है, फॉर एग्जाम्पल योर क्लोथ्स. हम लोग टीवी के ऊपर एक एड देखते थे बहुत ज्यादा बचपन में. व्हाट वाज दैट? सियाराम. So that stock is also listed over here. So all the combination of all the industries, the top 50 is included over here, and that is going to guide you that when to enter into the market and when not to enter into the market. I hope up to this is the clear. Can anyone please confirm? Or should I have to repeat this? Okay. Now I'm going to the Word document. I hope that as of now, the Word document is visible to each and everyone. Now, whenever you're investing into the stock market,
what is your basic motto to make the profit? Means simply why you are studying this stock market or why you are going to invest your 5 days in this FDP, because the basic motto of the stock market investment is that to earn the money. Now, how to earn the money? It's very simple, that buy at low price and sell at high price. Clear? See, why we have to invest into the stock market? Always remember that first thumb rule is that we always wanted to make the money. And as a beginner, I'm just talking about the beginners as of now. As a beginner, if you wanted to make the money, what is the strategy? It's very simple. Whenever you wanted to buy, you have to buy at the low price, and you have to always sell. For the sell, I'll just use the other color, and you have to sell at the high price. Now, please pay attention, each and everyone. Those even hate the maths, please pay attention. Suppose you bought something at the 100 rupees, correct? And if you are selling something at 105, clear? What you have done? You bought something at the price of the 100. You are going to sell something at 105. So the simple mathematics, how we are computing the profit, that is difference between buy and sell. So you can say that you bought at 100, you sold at 105. Please forgive me for my mistake. First should be the sell and then should be the buy. Okay. So the selling price was 105 minus 100. So we are going to make the profit of the rupees 5. Now the question arises that those who are not from the stock market background, I know that what you guys are thinking as of now. अरे क्या मैम 5 रुपए के लिए हम लोग इतना सब कुछ क्यों पढ़े? No. Always remember that in case of the stock market, हम लोग कभी भी ना एक quantity buy नहीं करते. Now you just think, I'm just going to write over here that 1 lakh quantity, correct? Quantity, हम लोग एक शेयर नहीं खरीदेंगे, अगर हम लोग 1 लाख शेयर खरीदते हैं एंड अगर वो मूव करता है सिर्फ 5 रुपये से, तो आप लोग सोचिए एंड अभी मुझे बताइए व्हाट विल बी योर प्रॉफिट. योर प्रॉफिट विल बी 5 lakhs. क्लियर? आई होप दैट इट्स वेरी सिंपल. चलो 1 लाख अगर किसी को ज्यादा लग रहा है कि नहीं मैम, वी आर द बिगिनर्स एंड वी डोंट वांट दिस, सो आई एम जस्ट मेकिंग दैट क्वांटिटी एज सिंपली 100. ओके, 100 क्वांटिटी हम लोगों ने खरीदा. अगर वो 5 रुपया भी बढ़ गया, how much profit you are making? You are making a profit of the 500 rupees. Now the question again arises that those who are from the non-finance background, मुझे पता है कि वो लोग क्या सोच रहे होंगे. अरे मैम 500 रुपये में क्या होता है आजकल, वर्कर भी तो 500 रुपया दिन का कमा लेता है. Now you have to again think in the practical manner whenever it comes to the investment. हम लोगों ने स्कूल लेवल में एक प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला पढ़ा था. आई होप सबको अभी याद आ रहा होगा थोड़ा सा. वो फॉर्मूला आपको क्या बताता है? आपको बताता है कि प्रॉफिट डिवाइडेड बाय योर बाइंग प्राइस. ओके, यही है ना फॉर्मूला. इफ आई एम राइटिंग रॉन्ग यू कैन से दैट कि हाँ यहाँ पे रॉन्ग कैलकुलेशन चल रहा है. अभी देखो 5 डिवाइडेड बाय 100, अगर मैं इसका परसेंटेज निकालती हूँ ना, सो दैट बिकम्स, जस्ट गिव मी 2 minutes. How to minimize this? Okay, no problem at all. I'll just reduce the size over here and I'll make this something like this. Okay, तो ये 5% मिल रहा है. Again
लोग ये भी सोच रहे होंगे कि यार 5% के लिए हम लोग इतना माथाफोड़ी क्यों करें। नाउ आई एम गोइंग टू शो यू द रियल एग्जाम्पल। इतना आई होप समझ में आ गया कि आप लोग पैसा कैसे कमा सकते हो, व्हाट इज प्रॉफिट, व्हाट इज प्रॉफिट परसेंटेज। आप लोगों को एक चीज हमेशा याद रखनी है, अगेन आई एम रिपीटिंग, नेहमी तुम्हाला एक गोष्ट लक्षात ठेवायची की whenever in the stock market you are doing the calculations, you are not at all going to do that in the rupees. Always you are going to do that in the percentage. Always. This rule you have to always remember. आप लोग हमेशा percentage में सोचोगे. Now I'm going to show you the one more example. Oh, just give me 2 minutes because that is not open on this login ID. Let me show you the real examples as of now. Okay. Now I'm moving the cursor over here. Okay. कोई पढ़ पाएगा ये कि मैं कहाँ पे कर्सर मूव कर रही हूँ? जहाँ पे देखिए यहाँ पे ग्रीन लाइन है, वहां पे मैंने कर्सर मूव किया है एंड आई एम जस्ट गोइंग टू क्लिक इट ओवर हियर. अगर वहां पे नहीं दिख रहा है, आप लोग यहाँ पे देखो जहाँ पे मैंने हाईलाइट किया है एट द डाउन. कैन एनीवन प्लीज रीड दिस फॉर मी? तो मुझे पता चलेगा कि लोगों को लिटरली समझ में आ रहा है कुछ. तो apart from the college faculties, if any participants will reply to me, that will be better. यहाँ पे परसेंटेज में आपको कुछ अमाउंट दिख रहा है? Yes, ma'am. That is 1.30%. Yeah, and this 1.30% is a appreciation. कितने दिन में? That is in a one day. So all this is the live data. You can cross verify me. As of now, आप लोगों के पास भी गूगल है, आप लोग गूगल के ऊपर जाओ, सेम यही वाला वेबसाइट निकालो, या तो फिर आप लोग गूगल के ऊपर जाके ऐसे सर्च करो. जो लोगों को और भी ज्यादा बिगिनर्स है, HAL. व्हाट इज HAL? दैट इज द हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स. ये एक शेयर का नाम है. दिस इज द गवर्नमेंट कंपनी. एंड यहाँ पे देखो, अभी यहाँ पे तो और ज्यादा क्लियर दिख रहा है आप लोगों को, जहाँ पे मैंने हाईलाइट किया है, दैट इज 1.32% अप. दैट इज एप्रिसिएशन. एंड कितने दिन में? सिर्फ एक दिन में. यहाँ पे टुडे लिखा है. ओके, सो दिस इज नॉट द थियोरेटिकल थिंग, आई एम जस्ट शोइंग यू द लाइव डेटा. एंड इसे तो मैं मैनिपुलेट भी नहीं कर सकती. यू कैन क्रॉस वेरीफाई दैट. एंड yes, Dolly Mishra ji, just give me 2 minutes, then we will discuss. Okay, now you think and tell me, अगर मुझे बैंक की FD में पैसा रखना है as of now, तो कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है for the FD? You can do the Google search and give me the reply. 6%. 6 to 7%. Okay, so again I'm going back to the Word document because I wanted to show you something. I hope that my Word document is visible. Yes, it's visible to each and everyone. Yes, ma'am. Give me 2 minutes. Okay, see, I'm just writing. मैं 6% में 1% और जोड़ रही हूँ. 7% पर एनम में बैंक के FD का रेट अभी कंसिडर कर रहे हैं. नाउ पर एनम का मीनिंग क्या होता है? पर एनम का मीनिंग होता है पूरे एक साल तक. मतलब ये होता है 365 डेज. करेक्ट? अभी आप लोग सिंपली देखो एंड मुझे एक चीज बोलो कि 7% कमाने के लिए 365 डेज मतलब 1 ईयर रुकना इज अ बेटर चॉइस, या एक दिन में 1%? Just forget about 1%. Every day नहीं मिलेगा. If you are the expert, yes, you will be able to make it. But आप लोग सिर्फ सोचो कि एक दिन में आपको 1% मिल रहा है, that is better, और 7% in a 365 days. आप लोग हर दिन में 1% कमा सकते हो, but with the help of the proper studies. जिसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा because you all are the beginners as of now. आपको थोड़ा स्टडी करना पड़ेगा, जैसे आप लोगों ने आपके डिग्री के लिए, आपके पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए स्टडीज किया था ना,
Well, see, this is also the one of the interesting subject that you have to study little bit. And that only we are going to study in the practical manner in the next 5 days. थोड़ा सा तो सही. Okay. Yeah, intentionally I'm not making this bigger. As of now, you are able to see this. We are talking about this thing. अभी आप लोग सोचो कि अगर आपको स्टॉक मार्केट 7% से ज्यादा रिटर्न दे रहा है. See, I'm not showing as of now PPT. This is the Word document. This is the Word document. We are writing over here as a screen. Okay. So, it's always better to study about the stock market in a significant manner, in a systematic way, to invest your time because you are going to get the more return. अगर आप लोग extreme beginner हो and अगर आप लोग आपके proper studies से, yes, I'm going to discuss about this also, Arun sir, that it is why it is the high risky and how you can avoid that risk, that we are going to cover up in the last day itself. We are just explaining about the basic concept as of now. So this is the reason why nowadays the stock market is playing very important role, because आप लोग इतना सब कुछ कर सकते हो if you are having the proper knowledge about particular thing. For example, again I'm going back over here and I'm just going to show you the one more data. Okay, this is the Tata Steel. Tata Steel आज के दिन में ऊपर था 1.07%. Okay, so this we have seen the positive side. इसका एक negative side भी है, as the sir said that yes, it is risky. As of now, I'll show you the one more example. See, यहाँ पे you are able to see the one stock, that is the Suzlon Energy. जैसे मैंने बोला था ना, electricity जो हम लोग अभी भी use कर रहे हैं because this is the evening time. So that companies are also listed on the stock market. अभी इसका stock आज के दिन ऊपर नहीं था. It is down. And how much it is down? That is by 0.04% it was down. So just because of that, always remember that in a stock market, it will never happen that कि आप लोगों ने कोई stock खरीदा and always it will move in the upward direction. No, it will always have the ups and downs. So how you have to study? You have to study in the systematic manner that try to buy at the lowest price whenever it is possible and try to sell at the highest price. Whether it is possible in the 100% situations, again the answer is no. But in the 90% situations, if you have studied the stock market in a right manner, then obviously you can make the money. Those who are the management faculties in this faculty development program, they are already aware that, you know, buying at lowest price and selling at highest price, this is not only the way to earn the money into the stock market. This is just a first step. You know, the in a stock market, you can sell the stock initially also and buy it later on. But that concept I'm not explaining intentionally because this faculty development program is just for the beginners. So from the beginners point of view only, we are explaining you this because we are going to come up with the faculty development program series where we will go step by step. Right now we are with the beginning, we have started this, then we will come up with the little bit advanced level. So this is the reason why we have to invest into the stock market. Now, always remember that whenever you are investing into the stock market, you have to always find out one important thing. Again, I have written on the screen that it's the real return. Now, what is the concept of the real return? See, whenever we are investing into the FD, what we feel that we always feel that
अरे मैंने तो FD रखा है बैंक में, बैंक has said that 7% we are going to give you, so this 7% is my or no. If you are calculating in that manner, again you are wrong. You have to always calculate the real return. And what is the formula of the real return? That is return minus your inflation. अभी ये inflation क्या होता है? Inflation means आपका महंगाई. Okay. From where you can get that data? Google. Go to the Google, search current inflation in India, and you will get that data. Then you have to deduct your tax component. Yeah, because those who are earning the salary of the 2 lakhs, 3 lakhs, they are into the 15% of the tax bracket. Sorry, 30% of the tax bracket. So we have to consider that tax component also. So whenever you are computing any sort of the return, you have to think about that. कि हम लोग अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो स्टॉक मार्केट में ही क्यों स्टडी करके इन्वेस्ट करें, बिकॉज यहाँ पे जो रियल रिटर्न मिलेगा वो थोड़ा सा हम लोगों को ज्यादा मिलेगा. लेट्स अज्यूम दैट जैसे किसी स्टॉक में, आई विल शो यू द रियल एग्जांपल ओनली. अगेन आई एम गोइंग बैक ओवर हियर. ये तो एक दिन का था, हम लोगों ने देखा था, बराबर. हम लोग सिर्फ यहाँ पे सब्सिक्वेंट डेटा देखते हैं. देखो, आई हैव क्लिक ऑन द 5 days. सो you have seen that in a 5 days, this particular stock has given the return of the 1.9%. मैं यहाँ पे 1 month के ऊपर क्लिक कर रही हूँ, तो 1 month में इसने दिया है 3.97%. and I'm clicking on the 1 year. देखो 1 year में आप लोग क्या नोटिस कर पा रहे हो? How much is the percentage return? I try to highlight it. See, it is 65.49. Okay, and again, क्या इसमें रिस्क है? Yes, but how to avoid that risk, that you can come to know with the help of your study. आप लोग किसी भी सिक्योरिटी में जाके इन्वेस्ट करो, there will be the risk component always, but how to reduce that risk component, that is in your hand with the help of your proper studies and proper knowledge, because there are the n number of the strategies to reduce that risk. And we are going to discuss about that also. So as of now, I'll just take 65%. Inflation में एक round figure consider कर रही हूँ यहाँ पे. That is 5%. And if you are the part of the 30% tax bracket, so it will be 0.30%. अभी आप लोग जो real return कमाओगे, that will be little bit better, correct? But अगर आप लोग यही real return FD का compute करते हैं, so that will be the extremely less. So just because of that, what you have to understand first, you have to study the stock market in a right manner. जैसे वहां पे रिस्क तो हमेशा रहेगा. For example, one participant is continuously posting that the stock market is the risky one. Yes, I'm saying that. Yes, it is risky. But you can reduce that risk with the help of your proper studies and proper knowledge. अगर आपके पास knowledge नहीं है, आप लोग दुनिया के किसी भी stock market में जाओ, you are going to make the loss only. If you are having the proper knowledge, if you have studied something in the proper way with the help of the proper risk management, अगर आप लोग कोई भी stock buy करोगे, you will never ever end up in the loss. Okay, तो अरुण सर, देखो कोई भी इंडस्ट्री देखो, आप लोग रिलायंस इंडस्ट्री देखो, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स देखो, या टाटा स्टील देखो, या टाटा मोटर्स देखो, या तो फिर फेसबुक का स्टॉक, यूएस स्टॉक मार्केट में जाओगे आप लोग, मेटा का स्टॉक देखो, या जो भी टॉप मोस्ट स्टॉक है ना, हर एक स्टॉक रिस्की ही है. बट आपको हमेशा याद रखना है, यू हैव टू फर्स्ट कैलकुलेट दैट इन एडवांस, that how much risk you can take. See, if you are getting monthly 10 lakh rupees and you are putting entire 10 lakh rupees in the stock market, then that is the wrong decision. No, you have to first understand that how much risk you can take. तो वैसे देख के you have to
invest into the stock market. That is the basic of your stock market. Please remember that आप लोग कभी भी आपका खुद का risk find out करोगे, that how much risk you can take in. Okay, risk you can take. And ये कैसे find out कर सकते हो? It's very simple. देखो, what you have to do, 100 minus your age. Suppose आपका एज है 25, तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे? I'll just again reduce the size. तो यहाँ पे आप लोगों का आंसर आ गया 75. सो आप लोग अगर 1 लाख रुपीस कमा रहे हो तो उसका 75% वो हो जाता है 75,000. इतनी तक आप लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो. बट क्या आप लोग पूरा 1 लाख करोगे? आंसर इज नो, यू आर नॉट गोइंग टू इन्वेस्ट दैट मच. अगर सपोज कोई सीनियर एज ग्रुप का है, लेट्स अज्यूम दैट देयर इज अ वन फैकल्टी हुज एज ग्रुप इज एट द 50, जिनका एज 50 चल रहा है, तो वो सर क्या करेंगे? क्या वो पूरा उनका सैलरी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे? नो, दे विल इन्वेस्ट द एज बाय फॉलोइंग दिस रूल कि 1 लाख रुपीज आ रहा है तो सिर्फ 50% उसका मतलब 50,000 वो लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे. देन एज अ बिगिनर यू हैव टू ऑलवेज रिमेम्बर अनदर सिंपल रूल. जैसे मैं इन्हीं सर का भी एग्जाम्पल लेती हूँ कि जिनके लिए हम लोगों ने अज्यूम किया है कि ये सर 50% ऑफ देयर इनकम विल इन्वेस्ट इनटू द स्टॉक मार्केट. एंड इसे मैं थोड़ा सा में डाल देती हूँ, सो इट विल इवन बिकम मोर इजी. मतलब हम लोगों को क्या करना है कि सर के जो 50,000 रुपीज है इनको इन्वेस्ट करना है. नाउ द क्वेश्चन टू बी अरुण सर. देखो अरुण सर, अब आपके पास 50,000 रुपीज है यहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए, आप लोग क्या करोगे? ये 50,000 रुपीज ना पूरे के पूरे एक स्टॉक में नहीं डालोगे. That also you have to do, and that is called as the principle of your diversification. आप क्या करोगे? इस 50,000 को डिवाइड करोगे बहुत सारे पार्ट्स में. जैसे फॉर एग्जाम्पल कम से कम तो आपको 5 पार्ट में डिवाइड करना है. सो अगर मैं ये 50,000 को 5 पार्ट में डिवाइड करती हूँ, हर एक पार्ट आता है, नहीं 25% इज अगेन रॉन्ग. यू हैव टू इम्प्रूव योर बेसिक्स. 25% आप कहीं पे भी नहीं डालोगे. The thumb rule is that minimum you should diversify into the 5 different components. Correct? So ये जो 10,000 रुपीज है ना, ये आप लोग दूसरे दूसरे सेक्टर में डालोगे. फॉर एग्जाम्पल आपने 10,000 डाल दिया रिलायंस में, बराबर. देन आप लोगों ने डाल दिया ये रिमेनिंग 10% HL में. आप लोग ऐसे डिवाइड करोगे. बट थंब रूल इज दैट आप लोग कहीं पे भी 25% नहीं डालोगे. एटलीस्ट इट शुड बी द मिनिमम. आई एम टॉकिंग अबाउट मिनिमम. यू हैव टू डिवाइड कैपिटल बाय 5. दैट्स इट. इतना मिनिमम है. आप लोग अगर ज्यादा कर सकते हो, डोंट डाइवर्सिफाई टू मच आल्सो, दैट विल बी अगेन रिस्की. बट कम से कम आप लोगों को ऐसे डिवाइड करके डालना है स्टॉक मार्केट में. क्यों? द रीजन इज दैट इकोनॉमी इज हैविंग द डिफरेंट साइकिल. कभी आपके कुछ स्टॉक्स बहुत अच्छा करेंगे, कभी आपके कुछ स्टॉक्स करेंगे. क्लियर? यस दीपक सर, whatever the query you are having you can ask me, and those who are having their own queries they can ask to me. Yes Deepak sir, you raise your hand. Okay, no problem. I guess mistakenly he has raised his hand. So I hope that the concept of diversification is also clear to all of you. आज हम लोगों ने सेशन में क्या देखा है? What is stock market? एकदम बेसिक हम लोगों ने चीजें देखी. What is stock market? For the beginners, what we have to understand that buy at the lowest point, try to sell at the highest point. Then हम लोगों ने सबसे important rule जो देखा है, that is this one. Please note down somewhere this, that always remember that you have to measure your returns
इन द परसेंटेज। आप लोग कभी ऐसा कंप्यूट नहीं करोगे कि अरे हाँ मैंने 500 रुपया कमाया, मैंने 200 रुपया कमाया। नो, नेवर एवर मेक दिस हैबिट। एंड वो हैबिट क्या होगी कि यू आर गोइंग टू think in the profit percentage way. Then the second important thing which you have to always understand, that you have to always compute your real return. कि अगर आप लोग कहीं पे भी पैसा डालते हो, whether in the FD, in the bonds or anywhere, so you have to apply this formula, and that formula is return minus inflation माइनस योर टैक्स। जो भी आपका टैक्स ब्रैकेट है, अगर आप लोग 5 लाख से कम कमाते हो, सो यू आर नॉट हैविंग अ टैक्स, बट दोज हु आर इनटू द हायर टैक्स ब्रैकेट दे हैव टू पे मैक्सिमम टैक्स। तो आप लोगों को ऐसे करके देखना है हमेशा कि आप लोग कहीं पे भी इन्वेस्ट करो, बट आपका रियल रिटर्न कितना आ रहा है। नाउ देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट जब भी आप लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करोगे, सबसे पहले आपको क्या देखना है, हाउ मच रिस्क यू कैन टेक। देखो, मेरा रिस्क एपेटाइट इज अ डिफरेंट वन, आप लोगों का रिस्क एपेटाइट इज अ डिफरेंट वन। इफ आई कंपेयर वन मेल एंड फीमेल ऑफ द सेम एज ग्रुप, लेट्स टेक अ सिंपल एग्जांपल। जैसे हम लोगों ने ये सर का एग्जांपल लिया था जिनका एज था 50, बराबर। अगर 50 का कोई मेल है, उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है, तो वो सर ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते। बट इमेजिन कि कोई 50 इयर्स ओल्ड की प्रोफेसर है, जो बहुत अच्छी खासी वेल सेटल है, जिनके हस्बैंड ही सारा एक्सपेंसेस देख रहे हैं, सब वही टेक केयर कर रहे हैं उनके एक्सपेंसेस का। सो वेदर शी कैन टेक द मैक्सिमम रिस्क, यस शी कैन टेक द मैक्सिमम रिस्क। बट एज अ बिगिनर आप लोग जब भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करोगे, आपको कौन सा रूल याद रखना है, हाउ मच रिस्क यू कैन टेक। अगर आप लोग 10,000 भी कमा रहे हो, आपके एज को सब्सट्रैक्ट करो, उसमें से जो पैसा बच जाएगा, दैट मच ओनली यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट इनटू द स्टॉक मार्केट, 100% नहीं। देन द नेक्स्ट थंब रूल यू हैव टू रिमेंबर, द रूल ऑफ द डाइवर्सिफिकेशन। कभी भी आप लोग आपके पैसे को एक ही स्टॉक में नहीं डालोगे। क्यों नहीं डालोगे? As the one of the sir already said that yes, it is a risky, and yes, I'm also saying that this is the risky. But please remember that in a finance, there is a one simple thing you have to always understand: higher is the risk, higher is the return. आप लोग अगर ज्यादा रिस्क ले लोगे तो ज्यादा रिटर्न के साथ आपको रिवॉर्ड भी मिल सकता है, बट कम मिल सकता है इफ यू आर हैविंग अ प्रॉपर नॉलेज। सपोज आपको स्टॉक मार्केट का ABC भी नहीं पता, फलाना फलाना इंसान ने आपको बोल दिया कि भाई मैं तेरे को बताऊंगा कि ये वाला स्टॉक है, तो आंख बंद करके उसमें इन्वेस्ट कर, देन यू आर डूइंग अ मिस्टेक एंड देन यू आर गोइंग टू बी द बैंकरप्ट। सो यू हैव टू स्टडी दिस एंड ऑलवेज रिमेंबर, स्टडी एक दिन में नहीं हो जाती है, यू हैव टू डिवोट सम सॉर्ट ऑफ द टाइम। जैसे आप लोगों ने सबसे पहले आप लोग प्री प्राइमरी में गए थे, प्ले स्कूल से बच्चा स्टार्ट करता है ना, आप लोग प्ले स्कूल में गए थे, देन यू स्टार्टेड योर अनदर एजुकेशन, एंड उसके बाद आपका डिग्री हुआ, उसके बाद आपका पोस्ट ग्रेजुएशन हुआ। तो आप लोग ऐसे भी मत ये करना, दोज हु आर ट्रीटिंग दिस एज अ लक्ष्मी चिट फंड, कि जो था ना फिर हेरा फेरी मूवी में कि लक्ष्मी चिट फंड 21 दिन में पैसे डबल, डोंट ट्रीट this place as your Lakshmi Chit Fund. Correct? It will take a time, but definitely over the long term, you can invest in a much more systematic manner. Now I'm going to take out the questions. If you are having any questions, please directly unmute yourself and ask the questions and queries to me. Should I have to stop sharing the screen? Yeah, anyone is having any questions, please unmute yourself. हेलो मैडम। Yes. मुझे बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, तो आपने जो निफ्टी का स्क्रीन कहाँ कैसे दिखाया था? आप क्या करिए पता है मैम, मैं कल आपको, मतलब अभी हमारा जो Day 2 Day 3 है ना, उसमें आप सारे नॉलेज आपको मिल जाएगा। आप गूगल के ऊपर जाओगे ना, आप सिर्फ NSE करके सर्च कीजिए, आपको वो चीज मिल जाएगा। एंड जस्ट डोंट वरी, आज मैंने बिगिनर्स के लिए जो AB से इम्पोर्टेंट था ना, बस उतना ही समझाया है।
ओके, सो जस्ट डोंट वरी, अभी भी हमारे पास 4 दिन और है। Oh, I don't know, Tanushree ma'am, that sir will tell you. Okay. Yes. Any other question? Okay. Principal sir, Praveen sir is the principal sir of the college. He has agreed that he is going to provide the recordings. Thank you, ma'am. Any question? Any query? मैम ये एप्लीकेशंस में 5 डेज का डाटा दिखाता है, नहीं 7 डेज का ही डाटा दिखाता है जो मैक्सिमम एप्लीकेशन है, कौन सा जैसे ग्रो की एप्लीकेशन है, ग्रो की एप्लीकेशन है या और भी है जो देखो सर, मैंने ग्रो कभी यूज नहीं किया है, बट Okay. मैंने अपस्टॉक्स यूज किया, जेरोदा यूज किया है। मैं चाहे तो ना आपको कल जेरोदा, अपस्टॉक्स, इनमें सारे ये लॉगिन करके आपको रियल डेटा दिखा देती हूँ। आप Okay. कितने भी दिन का डेटा देख सकते हो। एंड जैसे मैंने आज स्क्रीन शेयर किया था ट्रेडिंग व्यू का, उसके ऊपर भी आपको मिल जाएगा डेटा। ओके, बट मैं कल आपको दिखाती हूँ विदाउट एनी डिले, तो आपको थोड़ा जैसे मैम क्लैरिटी इनमें मैक्सिमम एप्लीकेशन में 1 डे डाटा होता है, 1 वीक या 1 मंथ, 1 ईयर, 5 ईयर, यही है। नहीं जैसे सर, जो आप फ्रिक्शंस कितना भी डेटा देख सकते हो, कितना वो भी उसके डेटा लिए मैम अलग प्लेटफॉर्म यूज करना पड़ेगा हमें। नहीं, सब ये डेटा फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। कल चाहे तो ना मैं आप लोगों को दिखा दूंगी। ओके ओके, यस। एनी अदर क्वेश्चन फ्रॉम एनीवन? और मैक्सिमम कितने वो होने चाहिए मैम पोर्टफोलियो में, मैक्सिमम या देखो कम से कम तो आपके पास मतलब 5 होने चाहिए। एंड मैक्सिमम आप ज्यादा भी मैक्सिमम मत करो। मतलब अगर आप ट्रेडर नहीं हो, आप सिर्फ इन्वेस्टर हो, तो Okay, आप ना 10-20 से ज्यादा आपके स्क्रिप्ट मत बढ़ाइए, क्योंकि उससे क्या हो जाएगा पता है कि आप ट्रैक नहीं कर पाओगे। जब भी अपना Yes, डे है ना फंडामेंटल एनालिसिस का, उस दिन मैं ये वाला प्रिंसिपल भी आपको समझाने वाली हूँ। ठीक है मैम। ओके, एनी अदर क्वेश्चन? एक क्वेश्चन आई गेस चैट सेक्शन में ही आया था कुछ तो। संयुक्ता मैम ने लिखा है, मैम ग्रो ट्रस्टेड ऐप है या नहीं, बिकॉज आई एम ऑलरेडी हैविंग द डीमैट अकाउंट इन ग्रो। देखो, ग्रो इज अ रजिस्टर्ड ब्रोकर, तो ऐसा नहीं है कि वो अनट्रस्टेड ऐप नहीं है। सो दिस इज द आंसर कि वो ट्रस्टेड ऐप ही है। देखो, आपके पास ना बहुत सारे चॉइसेस है ब्रोकर्स के। जैसे आई एम अ सब ब्रोकर, आई एम अ सब ब्रोकर ऑफ द अपस्टॉक्स, जिसे टेक्निकल लैंग्वेज में बोला जाता है ऑथराइज पर्सन। मतलब पहले सब ब्रोकर बोला करते थे, अभी टेक्निकल लैंग्वेज में उसको ऑथराइज पर्सन बोलते हैं। तो आई एम ऑथराइज पर्सन ऑफ द अपस्टॉक्स। तो वैसे ही जैसे अपस्टॉक सेबी के अंडर रजिस्टर्ड है, वैसे ही आपका ग्रो भी सेबी के अंडर ही रजिस्टर्ड है, एंड दैट इज द ट्रस्टेड वन। यस, यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया है एजुकेशन नाम से, एंजल इज द ट्रस्टेड। यस, ये सारे सेबी रजिस्टर्ड है। देखो, अभी मैं बोलूँ ना, इंडिया में कौन सा भी ऐसा फेक ब्रोकर तो नहीं है। एक्चुअली मैम ये जितनी भी ऐप है ये स्टॉक्स के बारे में जो डिटेल जानकारी नहीं देती है। पहले मेरे पास एक ऐप थी एसएमसी की, वो डिटेल उसकी प्रोवाइड करवाती थी, तो हमें सहायता मिल जाती है कि हम डिसीजन ले सके कंपनी की पूरी वो हिस्ट्री पढ़ के। अब ये जो मैक्सिमम ऐप है उन्होंने भी ये जो फीचर है वो हटा दिया है, और ग्रो में और अदर ऐप में तो है ही नहीं कि हम नहीं उसका सर, देखो बहुत सारे वेबसाइट्स है। मतलब आप अगर मेरे सेशंस देखोगे ना, हम लोग जो अभी जी मैम। लेने वाले हैं, मैं आपको पीपीटी से कुछ नहीं पढ़ाने वाली हूँ। आई जस्ट शो यू जी द मैम। रियल डेटा। जैसे आज मैंने आपको एनएससी ओपन करके दिखाया ना, तो मैं आपको फंडामेंटल एनालिसिस का जब भी अपना डे आएगा ना, मैं आपको वेबसाइट्स दिखा दूंगी। उसके लिए आपको कोई भी चार्ज नहीं है, आप फ्री ऑफ कॉस्ट सारा डेटा वेरीफाई कर सकते हैं। ओके, एकदम से डिसीजन लेने के लिए मुश्किल होता है मैम, फिर हमें मतलब गूगल पे ही करना पड़ता है, उसके लिए अलग से जाना पड़ता है, ऐप इतना टाइम होता नहीं हमारे पास। नहीं और नहीं, अगर वो एप्लीकेशन मैं आपको एक दो एप्लीकेशन साइट्स बता दूंगी। आप
जी उसके ऊपर आपका स्टडीज पूरा कर सकते हो। And सर आजकल तो डेटा पूरा हाँ, रेडीमेड वो तो आता है है, मैम। यस मैम। तो आपको थोड़ा सा ये मतलब अभी ना आपको यू आर ऑलरेडी इन्वेस्टिंग, तो देखो अभी आपको इन्वेस्टमेंट के लिए ना दो चीजें खुद के हिसाब से डिसाइड करनी है कि आप फंडामेंटल्स के साथ ज्यादा कंफर्टेबल हो या टेक्निकल्स के साथ। तो आप उसी में आपका एक्सपर्टीज बढ़ाओ अगर आपको मैक्सिमम ये लेना है, जैसे स्विंग ट्रेड्स हम लोग बोलते हैं। ओके, हम लोग कल उसके बारे में इन डिटेल डिस्कस करेंगे। ओके मैम। ओके, थैंक यू। यस, यहाँ पे एक क्वेश्चन आया था, अगर हम दूसरे ऐप में डीमैट अकाउंट ओपन करेंगे लाइक अपस्टॉक्स और ज़ेरोधा, तो क्या वो सेम स्टॉक्स हमें शो करेंगे जिसमें हमें हमने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है, या हमें न्यू स्टॉक्स बाय करने होंगे? देखो, जैसे अगर डीमैट अकाउंट क्या होता है, जैसे बैंक अकाउंट होता है ना, बैंक में हम लोग जाके अपना पैसा डिपॉजिट करते हैं, आजकल तो वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में ही होता है। वैसे ही आपका डीमैट अकाउंट है जिसमें आपके शेयर स्प्रेड होते हैं, करेक्ट? सो आप इंडिया में कितने भी डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो अपने नाम के ऊपर। जैसे बेसिकली आई एम द एफएनओ ट्रेडर, तो मेरे खुद के मल्टीपल डीमैट अकाउंट्स हैं, क्लियर? तो आप लोग कितना भी कुछ कर सकते हो, अपना पैन नंबर तो एक ही होता है, अपना आधार नंबर तो एक ही है, एंड गवर्नमेंट को टैक्स देना ही है। सो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग ये कर सकते। Then Viresh sir ka question है that I have still not have the investment but willing to start soon. So I'm telling you that please study at least the basics. जैसे हम लोग मतलब प्रिंसिपल सर के साथ हमारा एक शॉर्ट टर्म कोर्स भी आ रहा है where you will, if you are a beginner, okay, and आपको सिर्फ फंडामेंटल सीखना है, तो सिर्फ फंडामेंटल आप लोग सीख सकते हो, सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस सीख सकते हो कि कैसे आपको लोएस्ट लेवल पे बाय करना है, कैसे आपको हाईएस्ट लेवल पे सेल करना है। ऑल दैट डिटेल थिंग्स यू विल लर्न ओवर देयर। देखो ये 5 डेज के एफटीपी में ना हम लोग आपका सारा बेसिक क्लियर करेंगे, बट इन डिटेल जो होगा ना, वो जो सर अभी थोड़े दिन के बाद कोर्सेस लॉन्च करेंगे उसमें आप लोग सीख सकते हो। बिकॉज सिर्फ 5 दिन में explaining each and everything is realistically not possible। जैसे अगर आप लोग सीए हो या आपने एमबीए किया है तो आपको पता है कि it takes a time, clear? Then हेलो मैम, yeah, ये yes ma'am। ब्रोकर, सब ब्रोकर, एजेंट, ऑथोराइज्ड पर्सन, ऑथोराइज्ड डीलर, ये सब डिफरेंट डिफरेंट है क्या? हाँ, ये सारे डिफरेंट डिफरेंट है। जैसे सिंपल चीज आप समझो कि जो ब्रोकर होता है ना, वो डायरेक्टली मतलब जो नॉर्मल रिटेल क्लाइंट्स है उनको आपके डीमैट अकाउंट नहीं दे सकता है, तो दे हैज टू टेक द पीपल लाइक अस। मतलब जैसा अपस्टॉक है वो है ब्रोकर, उसकी मैं हूँ सब ब्रोकर, तो क्या मैं अकेली सब ब्रोकर हूँ? नहीं, इंडिया में एन नंबर ऑफ द सब ब्रोकर्स दे आर हैविंग, एंड वी आर प्रोवाइडिंग द सर्विसेज टू आवर क्लाइंट्स, क्लियर? तो सबसे पहले होता है टॉप पे ब्रोकर, ब्रोकर के नीचे होता है सब ब्रोकर, एंड सब ब्रोकर आर प्रोवाइडिंग द डीमैट अकाउंट्स और द डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज टू देयर क्लाइंट्स। ऐसे हायरार्की। जैसे एकदम से सिंपल लैंग्वेज में मैं अगर समझाऊं, जैसे फार्मर होता है ना, कोई भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन वो ले लेता है, बट डायरेक्टली आके फार्मर, बहुत कम फार्मर अपने घर तक आके माल पहुंचा के जाते हैं। that thing in Maharashtra goes to the APMC market, मतलब फार्मर बेचेगा होलसेलर को, जो भी मर्चेंट होता है उसको, फिर वो होलसेलर्स भेजेंगे अपने जैसे रिटेलर्स को। तो वैसा ही चीज होता है स्टॉक मार्केट। और ये डीलर एंड सब डीलर? नहीं, डीलर्स देखो, डीलर्स जो होता है ना, तो डीलर इज अ प्रोफेशन, मतलब ये एक जॉब का एक नाम है। जो डीलर मतलब जो पंच करता है ऑर्डर्स, पहले के जमाने में डीलर्स का बहुत इंपॉर्टेंस हुआ करता था, बट अभी रिटेल्स क्लाइंट्स जैसे आप हो या बहुत सारे लोग हैं, तो उनके लिए डीलर कुछ मायने नहीं रखता है, बिकॉज अपने पास तो मोबाइल ऐप है, हम लोग मोबाइल ऐप से ही ट्रेडिंग कर लेते हैं। तो अभी डीलर नहीं लगता। पहले के जमाने में लोगों को पता नहीं रहता था कि कैसे पंच करना है ये वो, तब
ऐसे होता था कि हम लोग ब्रोकर को कॉल करते थे एंड उनके यहाँ पे जो बंदा बैठा था कि जो अपना ऑर्डर पंच करता था कि SBI के 10 शेयर्स ले लो, तो ये जिसका काम था उसको डीलर बोलते हैं। तो ये शेर खान, मोतीलाल ओसवाल ये कौन थे पहले जमाने में, मतलब? नहीं, वो अभी तक है एंड दे आर द ब्रोकर्स। Okay, they are not the dealers, they are the brokers. हेलो मैम। Yes, दीपाली मैम। यस मैम, मुझे क्वेरी है। Yes. जीरोधा का मैंने इनिशियल, जैसे अभी थोड़ा सा नॉलेज के लिए मैंने जीरोधा अकाउंट ओपन किया था, तो हाँ। मैंने बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं की। डीमैट में मैंने 5,000 इन्वेस्ट किया, तो 3,500 या 4,000 तक मैंने इन्वेस्टमेंट किया। बैलेंस मैंने 1-1.5 महीना देखा ही नहीं। मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट थोड़ा बहुत डाला था, तो ऑटोमेटिकली आफ्टर द 1 मंथ व्हेन आई सीन, तो मेरा बैलेंस जीरो दिखाया गया। तो बट ये मैम जीरोधा, यस। ये ऐसा ना, आप आपके बैंक अकाउंट में चेक करो, सेबी के नॉर्म के हिसाब से क्या होता है पता है, कि जो भी आपका अनयूज फंड है, जैसे अज्यूम करो आपने 5,000 रुपया डाला था, आपने 3,000 के ही शेयर्स खरीदे थे, 2,000 का बैलेंस था, तो सेबी का एक रूल है अभी कि इन्वेस्टर का पैसा बहुत दिन से पड़ा हुआ है ना, तो हर 3 महीने के बाद ब्रोकर को वो पैसा डीमैट अकाउंट से आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट करना पड़ता है। आप चेक करो, ओके प्लीज ओके कंफर्म ओके और इसे बोला जाता ओके है क्वार्टरली सेटलमेंट। ओके फाइन मैम, क्योंकि ये कहीं से भी इंक्वायरी नहीं मिल रही थी, और जीरोधा भी ये काइंड ऑफ ब्रोकर। आपका भी ऐप होगा ना, आप फंड्स में यस जाओ, अगर आप ऐप यस से कर रहे हो या तो फिर डेस्कटॉप से, आप फंड में जाओ, यस वहां पे ना हिस्ट्री देखो, विड्रॉवल करके, तो वहां पे दिखाया होगा कि क्वार्टरली सेटलमेंट, या ओके तो फाइन, फिर आई सी। हाँ, आप देख लेना ओके एंड मुझे ओके बता मैम, देना। फाइन फाइन, कल मैं देख के बताती हूँ। थैंक यू मैम। या श्योर। एक्सक्यूज मी मैम। यस डॉली मैम। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम, आप मेंशन कर रही थी कि कुछ कोर्सेज इंट्रोड्यूस करने वाले हैं रिगार्डिंग रिलेटेड टू द हाँ, स्टॉक मतलब मार्केट मैम। सर के साथ डिस्कशन चल रहा है, प्रिंसिपल सर उसका अप्रूवल दे देंगे बाद में, एंड प्रिंसिपल सर एंड जो अदर फैकल्टी मेंबर्स है ना, वो आपको कम्युनिकेट कर देंगे, सेम ही व्हाट्सएप ग्रुप में। तो ये ऑनलाइन होंगे मैम? तो सारे courses? ऑनलाइन, सारे सारे ऑनलाइन, ऑनलाइन ना, सो because ma'am, ओके। this college is a very good institution in the Pune and I'm from Mumbai. तो अभी हम लोग जो बैठे हैं ना, वो बहुत सारे डिफरेंट लोकेशंस पे बैठे हैं। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू। तो जो भी होगा कॉलेज का अभी, वो ऑनलाइन ही है। ओके मैम, थैंक यू मैम। एनी अदर क्वेश्चन? अरुण सर इज हैविंग अ क्वेश्चन। मैम, IPO बेस्ट होता है या म्यूचुअल फंड? सर, अगर आपके पास नॉलेज है तो हर एक इन्वेस्टमेंट एवेन्यू बेस्ट, करेक्ट। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि म्यूचुअल फंड खराब है या IPO खराब है या कोई स्टॉक खराब है। अगर आपके पास अच्छा नॉलेज है, आपको पता है कि कब किसे चुनना है एंड प्रॉफिटेबल बनना है, दैट्स द आंसर। कुछ IPOs बहुत बेस्ट होते हैं। हेलो यस मैम, सर। डिस्कशन तो सब हिंदी में हो रहा है, इसलिए एक रिक्वेस्ट अरे है। सर, मराठीत विचारू शकता, मी स्वतः मराठी आहे, फक्त कसं आहे ना की ऑल ओव्हर पार्टिसिपेशन होतं इंडियामधून, म्हणून ओके 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 मॅम, आम्ही पण लोक पर्यंत जेवढे काही क्वेश्चन विचारले गेले ती पूर्ण मराठी आणि हिंदीमधूनच, तर माझी रिक्वेस्ट आहे तुम्ही की मराठीमध्ये विचारू शकता आणि मी तुम्हाला पूर्ण मराठीमध्येच उत्तर देईन। ओके मॅम, थँक्यू। विचारा। नाही, आपलं समजलंय, फक्त एकच क्वेश्चन आहे की समजून सांगत असताना की रिस्ट्रिक्शन द्यावी देता अदर लँग्वेज हिंदी मराठी। बर, चालेल। आता उद्यापासून ना मी एक काम करते, इंग्लिश, हिंदी आणि मराठी अशा तिन्ही लँग्वेज मध्ये ते एक्सप्लेन करते, पण आज असं काही झालं का? म्हणजे इंग्लिश आणि हिंदी, ओके ओके हा, चालेल, थँक्यू। मी उद्यापासून ते लक्षात ठेवेन। आणखीन काही सजेशन होतं का? काही क्वेश्चन्स? Ma'am, can I be conclude? Yes, sir. If no one is having question, definitely you can conclude.
Participants have any questions? We Thanks share for our feedback link on our WhatsApp group afterwards. Now I request our honorable IQAC coordinator, Professor Ramesh Shitole, for vote of thanks today's session. So Ramesh before Shitole, sir. that, can I speak for 2 minutes? I'm Yes, ma'am. thanking Yes, to sure. the entire college team because they are working since morning, and right now it's in the evening 8:30. But the entire team, including the faculty, including the principals, or each and everyone, is still in the meeting. Means they are working for the extra hours. सकाळपासून ही लोक खूप काम करतायत. त्यांनी अगदी लेट पर्यंत सगळे पार्टिसिपेशन्स घेतलेले होते. आणि त्यांनी सगळं हे मीटिंग अरेंज करण्यापासून या लोकांनी आज खरंच खूप काम केलेलं आहे अँड आय एम रिअली थँकफुल टू ऑल ऑफ यू टू द एंटायर टीम. थँक्यू सो मच. Thank you, ma'am. Your valuable guidance. Now I request our IQC Thank you, ma'am. coordinator, Ramesh Shitole, sir, for vote of thanks. Shitole, sir. Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Good evening, all. I am Professor Ramesh Shitole, IQAC Coordinator, Sri Vasantrao Farate Patil, Arts, Commerce and Science College. Honorable Mronal Rajiv Farate Patil, ma'am, Founder Secretary, Sri Vageshwar Gram Vikas Pratishthan, Mandavgan Farata, respected resource person, Savita Bodke, ma'am, our esteemed principal, Professor Praveen Kurumkar, sir, organizers and participants. It is my privilege to extend a heartfelt vote of thanks on behalf of the entire team for today's successful first day of the faculty development program. First and foremost, I would like to express our sincere gratitude to Savita Bodke ma'am for taking the झालं session sir, vote of thanks with us चाललंय. today. She has हो a हो हो wealth of knowledge and experience हो that हो will हो undoubtedly inspire हो and हो benefit हो sir. all of us. Yes, Our sir. heartfelt thanks go to Professor Praveen Kurumkar sir for his constant support and visionary leadership, which has always motivated us. A special mention to our Honorable Secretary, Rajiv Farate Patil ma'am, whose dedication and commitment to excellence in education play a vital role in the success of our institution. I also extend my gratitude to the Commerce Management and IQC departments for their tireless efforts in organizing these events and ensuring everything runs smoothly. Finally, I would like to thank all the participants for their active engagement and enthusiasm. I encourage each one of you to make the most of this faculty development program, and it is designed to help you grow personally and professionally. Once again, thank you all for your valuable contributions. We look forward to an enriching second day of the program. Thank you. Thank you, all of you. Thank you. हा सर, झाली संपली आता. आताच कंप्लीट सर. ते नेटवर्क कंजेशन आलं ना सर की ऑटोमॅटिकली लेफ्ट होते. हे थोडे स्क्रीनशॉट पाठवतो.
ते आजचे स्क्रीनशॉट पाठवतो. आता काय राजदंडावरती आता पार्टिसिपेंट होऊन काय करतो येडायला काय आताची मीटिंगला आलाय. येडा, येडा. तर आपल्याला हे अकाउंट लॉग आउट करायचं कसं करायचं तिथं येईन ते साइन आउट ऑफ ऑल ऑल हे सगळीच हॉटेल आउट मग तुमची हा ते किती एम आय होईल ठीक आहे प्रवीण कुरुमकर मॅनेजर गुगल अकाउंट म्हणत आहे. ते आजच्या दिवसच सजाव केलं हे तर मॅडमचं घ्यायचं तुम्ही काम करत बसताय. जाऊ का सर मग मी जाताना फक्त ते खाली घ्या. येतोय ना हा मग नाही काय अडचण सर. मॅडम आतमध्ये बोलत होता. जाऊ का सर मी
त्या